Any idea about the retail business of HPCL? No sir, I have not that. No idea. No sir. So with you will offer some profile like marketing, operation, design. Okay, which profile you will choose? Sir, it's I will be flexible in any of the profile basically, sir. But if I have to choose, then I will go for the marketing, because I am more interested toward the managerial role throughout my college life also. That's why I will go for marketing. Parallel, you are doing the basically technical knowledge, na? Yes, sir. Went for I was doing technical also, but I am doing both. I work in the managerial part also, being a club member of SE club, and I enjoyed there also, sir. So don't you think so that after BTech you should go for the MBA? Sir, I was not that much interested in MBA. Okay. How can India be more energy efficient? Sir, being more energy sufficient, we have to invest more in the renewable energy source of energy, because sir, as we know, each year each country is being shifted toward the automation, and toward the automation, robotics, and the CPS. So to run these things, we need more energy. So and we can't totally rely on the fossil fuel. So to be more energy sufficient, we have to be more focused and invest in the renewable source of energy. Do you have any idea about IOCL? IOCL, yes sir. Tell me some things about the IOCL and HPCL. Tell me 5 things about the HPCL which is better as compared to the IOCL, and give me 2 negative points of HPCL as compared to the IOCL. So one of the better thing about HPCL compared to IOCL is that HPCL is being located in very remote locations also. There are petrol pumps in remote locations also. Even they are not having the profit from there, but to provide the energy sector in those areas, they are providing a petrol pump, which is that not much that in IOCL in compared to IOCL. Also in HPCL, sir, engineers who are working as engineers get the opportunity to work in defense also. They used to send the people for the defense training, and in the case of emergency, people can serve in the defense sector. So this was also absent in IOCL. You appeared for the ND exam or CDS exam? Sir, I prepared for the ND exam also and for the FCAT exam also. FCAT also, not CDS? Sir, CDS also. CDS also. So you out from the SSB na in Yes, NDA or CDS? Sir, in NDA and FCAT. In both. Yes, sir. Okay. Okay, Suvit, you appeared for the GATE examination? Yes, sir. In 19, 20, 21. Yes, sir. Tell me the 3 consecutive years your rank. Sir, What was your ranks? My rank was 4465. 4465 in 2019. Yes, sir. Okay. In 2020, my rank was 3125. 3125. Okay. In 2021, my rank was 1135. 135. 135. 135. Okay. So you will get the call from ONGC also, I think. ONGC, IOCL, lots of PSU will call you. Sir, I got call from IOCL. Okay. I appeared in the interview, but I got eliminated from the merit list. Merit list. Are you going to appear in 2022? 2022, yes, sir. And in that case, if you will get the good rank, like in under 100, and you selected in HPCL, Yes, and you will get call from IOCL. So in that case, what will you do? Sir, as I said, I don't differentiate between the PSUs, but I will prefer HPCL over IOCL. One of the biggest reasons is that I also wanted to work in the defense, so I can get training. That is the luck by chance. I mean, it's not a sure shot na, that you basically joined the defense sector. Sir, they will going to provide me the HPCL will going to provide me the opportunity, so I am going to utilize that opportunity. This is the only reason. This is the sole reason. So the biggest reason is that only, and IOCL, HPCL are equivalent to me in compared to everything else. Okay. What are your hobbies? Sir, my hobby is to write poems and play cricket. Playing cricket and writing poems. Yes, sir. Okay. What was the title of your last poem? Sir, title of my last, I written in Hindi. We would like to listen some 2 lines. Yes, sir.
पल पल हर पल यूं ही कट गया, जिंदगी दोस्ती का नाजुक धागा टुकड़ों में बट गया। कुछ दोस्त हमराह रह गए, बाकी तो बस बेगाना हो गए। याद आते हैं वो पल जब एक दूसरे को परेशान करते थे हम, अब तो बस उन यादों से ही परेशान हो गए हम। संसार के अपार समंदर को साथ पार करने चले थे हम, बट कश्ती एक नहीं थी, भूल गए थे हम। अब तो बस दुआ करता हूँ ये कश्ती कहीं मिल ना जाए, वापिस एक दूसरे का नकाब कहीं दिख ना जाए। जिन यादों को दफना चुका हूँ, सामने आके कहीं बिखर ना जाए। ओके, वेरी गुड। सो मुझे एक चीज़ बताइए, विच विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, है ना, एंड एज यू सेड दैट विराट कोहली इज योर आइडल, है ना, सो कौन सबसे बेहतरीन दोनों में से कैप्टन है? अच्छा कैप्टन कौन है? So it's very controversial because being a captain you have to be think about all the circumstances, how the players are working, how you are leading the team, and in my opinion both are world class captains and both have achieved a lot of things. But in pressure situation, in the crucial games, Virat Kohli captaincy lacks somewhere. Okay. So in that case, Rohit Sharma used to be more cool and calmer, like MS Dhoni. So in crucial cases, the Rohit Sharma captained the team much better in compared to Virat Kohli. As I can see in your depth that your marks are about to 78%, 17 approximately 80%. Right? That is the good percentage overall, I can say. Okay, but I also found that you are a very you can say constant performer. Yes. Constant performer meaning basically 80 से अगर 85 और 90 आते तो I would say कि you are basically performance is continuously increasing. But I found that your performance is constant basically. Can you tell me about this? Yes, sir. Basically, in my 10th class, I was not a good student. I was not in academics. I was not a good student. I used to be ranked below average student. But after joining 11th class, I decided to prepare for the competition exam, to prepare for the JEE basically. So at the time, I was more focused towards JEE exam, and I was not able to focus in my 11th and 12th class to perform good in the boards exam. Even though that's why I didn't go 12th. In my 12th percentage was 78.8% only, and my JEE score was 262 at that time, and on the basis of that only I got admission NIT. So I would say that I was not. It was not like that. I was not performing good. I was not increasing my performance. It was like, sir, I was not focusing toward it at that time. Okay, my last question is, what was your role in your BTech project, and how many members were there? Sir, okay, sir. In my BTech project, there are 4 members, and my role was basically to construct the equipment. Basically, we constructed a cooker. From cooker only we have done the pyrolysis process. You buy the cooker or you construct the cooker? We buy the cooker, and then we made some changes in that. Made some changes like? So, for example, we removed that black Whistle part? Rubber part? We removed that whistle part and joined the one copper wire with it, so to remove the gas from it, and also the black covering. Rubber, black rubber. Black rubber we removed and we used asbestos wire, and we so to it can able to absorb more amount of energy. Okay. Thank you so much, Suvit, sir. You did work in what company? NBC Bearing Company, Jaipur. NBC Bearing Company, Jaipur. So, what are the responsibilities you have in that company? So initially I was given training. It was 1 year training, but I left the job in 6 months. So, why you left the job? Sir, I wanted to work for an organization which are best in the India, and NBC is not best? Sir, in salary wise, NBC is one of the best company. No sir, I think there are more other companies like HPCL, IOCL and ONGC. These are the government organization. Yes sir, I wanted to work for a government organization that giving me the professional growth in career. Which kind of things are motivates you for joining the government services? Why rather I can say why you left the NBC Bearing and you want to join in HPCL? Sir, the main thing was there that the salary constant, because my salary was not good in NBC Bearing and I was not able to completely satisfying the demands of my family by that salary.
So I wanted to work for a company. Dheeraj, can you think that if you are enough capable with your skills, Yeah. then salary is a barrier? Sir, actually, my skills was not recognized at the campus placement. I think there was, because they were only selecting on the basis of interview and interviewing skills, and they are not judging the technical knowledges. And in these company, I have given the opportunity that my technical skills can be judged. So, sir, I wanted to. So work for private this companies are not judging the technical skills of candidate. Sir, Do you think it? Yes, sir. They didn't judge it. You worked in 6 months in Bearing, NBC Bearing company, Yes, and sir. you say that NBC Bearing is not judging you, okay? And you Sir, say the I get HPCL will placed judge in- you. No, sir. NBC Bearings, I was easily placed, sir. There was nothing, nothing so much. Okay, tedious. what kind of things you feel irritating while you worked in 6 months NBC Bearings, so that you can you want that, yes, I will join the HPCL. I want to join the HPCL. Sir, What kind of things are irritating you while you Sir, NBC working was in a very good company, sir. I'm not criticizing the NBC Bearing company, Okay. and I met their amazing pupils. I learned a lot of things in 6 months, and there are great memories from NBC Bearing. And sir, I think that was the time, that was the initial stage of my career when I can take decisions to go for greater organizations. So you So go I left for the NBC the Bearing. government PSUs company Yes, and sir. all. So what kind of exams you fought in your Sir, I have life? written GATE examination 3 times. GATE? Yes, Okay. sir. And But I couldn't make it more than 60 marks. okay. So you can't go for MTech? Sir, In 60 marks you will get the MTech in very good college? Like sir, MNT yes, Jaipur? I could get a good college, and but sir, my family condition was not there to pay for the fees, the MTech fees. If your family condition was not good, then you would not leave the NBC Bearing company, you know. No, sir. If your family condition is not good, then you have not courage to leave that sir. that job. मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मेरे को जॉब छोड़ने के लिए काफ़ी मना किया था, लेकिन मैंने उनको समझाया कि सर यही वो टाइम है जिसमें मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ और जल्दी ही कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ सर. और सर प्राइवेट जॉब का ऑप्शन तो सर बाद में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. 1-1.5 साल प्रिपरेशन करने के बाद. Means if you are not selected in HPCL, then you will go for private sector. Yes sir, I will go private sector, along with I will continue my preparation. Means your final aim is to join the government sector. Okay, suppose HPCL will not consider you for JEE and you join the private sector, okay, and after 2 to 3 years, along with this you prepared for the government examination. After 2 to 3 years, you will see that your salary is basically higher than the government sector which you want to join. It may be possible, you know. In private sector, the growth is very exponential form. In 2 to 3 years, you see the salary of your in your pocket basically is more than the government sector. Okay, then can you join the government jobs? Sir, I think that initially in 1 or 2 years, my salary will not be much enough. I will Suppose. I will take 1 or 2 years for government examination. Then I will Suppose. continue for private organization, sir. I will not leave. Means private salary is not organization. barrier for you. Is it correct or not? Or the Sir. salary is barrier. Means what you want, salary or government job? Sir, main thing I want the organizations. Organization. Okay, How thank you so well much, the Dheeraj. organization Sir. हेमंत, यदि टेक्निकल की बात करते हैं यस सर. तो आपने मैकेनिकल से बीटेक किया है और Yes. मार्क्स भी अच्छे हैं, 79% मार्क्स आए हैं. यस सर. तो आपके टेक्निकल में कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता था? Sir, I feel thermodynamics and strength of material. I am comfortable in that, sir. ओके ओके. Yes. आप एक बात बताओगे कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है Yes, sir. तो एक तरह का मैकेनिक्स है. Yes, sir.
आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ऑलरेडी हमने मैकेनिक्स पहले भी पढ़ रखा है, Yes, sir. 11th में पढ़ रखा था, Yes, sir. 9th में पढ़ रखा था। Yes, sir. आखिर इस मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कारण है, Sure, sir. बताएं। Sir, in mechanics, we consider and we evaluate object from outside. In mechanics, we generally look forward for about speed, acceleration. In general, we look forward about speed, acceleration, what is torque. But in strength of mechanics, we consider it from inner side. We can look forward towards what is the stress that is a inner phenomena in a material. Other than that, tension phenomena which actually happen inside, and in that way. नहीं, in basic mechanics we also study tension. In laws of motion you also study Yes. about tension. Yes, sir. तो ये तो डिफरेंस नहीं है ना, टेंशन तो वहाँ भी Yes, होगा। sir. Other than that, we can find that how the material, what is the actual strength of material, for how long it can be sustained, and if we talk about usability of material, then can we use that particular material for that particular service? In that way, sir. In simple way we also say that in mechanics of solid generally we deal about deformation. Yes, sir. सारे शब्दों का एक ही शब्द है कि डिफॉर्मेशन का एनालिसिस करना है Yes, sir. और वहाँ डिस्प्लेसमेंट का एनालिसिस करना है। Yes. इतनी बातें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, Okay, sir. Thank you. ठीक है। ओके, आपने टेंसर क्वांटिटी के बारे में नाम सुना होगा, Tensor, yes, sir. क्या होता है वो? Sir, about tensor quantity, sir. So, नाम नहीं। no. Yes, yes, आपने- I heard about the name, but I Okay. don't recall it right now. Sir. हम जो स्ट्रेस जनरली पढ़ते हैं, स्ट्रेस दो टाइप के जनरली आपको पढ़ना है, एक इंजीनियरिंग, एक ट्रू। Yes, sir. दोनों में बेसिक डिफरेंस। Sir, in engineering stress, we consider the area remains constant throughout its deformation. In true stress, that is actual stress, where if deformation is there, then area will change, sir. ओके, Yes, ठीक है। यदि मैं आगे प्रेशर से स्ट्रेस को कंपेयर करूं, yes, sir. तो आप एक आध पॉइंट बता सकते हैं कि प्रेशर और स्ट्रेस सेम है या डिफर है, तो कैसे है, Yes, sir. बताएं। Sir, pressure and stress both are different phenomena, sir. Both are internal phenomena. Pressure generally applies to fluid, and stress generally applied to solids, sir. ओके, Yes. which type of loads are responsible for pressure, which type of loads are responsible for stress? Sorry, sir. I can't. No idea. ओके, आपने यूटीएम मशीन का नाम सुना है? Utility machines. यूटीएम मशीन, यूटीएम, Sorry, sir. UTM, UTM. यूटीएम Universal testing machine. हाँ, Yes, हाँ। sir. I heard about it. क्या मतलब, किस लिए यूज करते हैं उसका? Sir, to find the strength of material, that for that, if the phenomena is that, sir, we have to create tension in material, and we can know that for what is the stress limit and what is strain limit in that material, sir. मतलब आपके अनुसार वो मशीन सिर्फ टेंशन को ही चेक कर सकता है कि और भी कुछ उस पर चेक किया जा Sir, सकता है? I know only about that, sir. ओके Yes. ओके, चलिए। यदि मैं आगे बात करूं, Yes, sir. तो आपने कॉलम के बारे में सुना होगा। Yes, sir. कॉलम और स्ट्रट में क्या डिफरेंस है? स्ट्रट्स एंड Yes, sir. कॉलम, बेसिक डिफरेंस क्या है? Sir, I don't know. चलिए, यदि थर्मो की बात करते हैं, Yes, sir. सेकेंड लॉ क्या था थर्मोडायनेमिक्स का? सेकेंड लॉ, Sir, second law of thermodynamics is that if we have to supply energy from a lower temperature to higher temperature, then we have to do some work to supply energy. There are two statements in that. First is Kelvin and Planck statement. Second is Clausius statement. ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है? Which one, sir? दोनों स्टेटमेंट आपने जो बोला, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट? Sir, I don't know about what the positive and negative refer. तो Yes, आपने स्टेटमेंट यदि बोलोगे तो क्या पढ़ोगे? क्लाउसियस स्टेटमेंट को क्या बोलोगे? इट इज, yes, sir. In that way, both are negative statements. तो एक तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट ही है। क्लियर है। सीओपी के बारे में आप जानते हैं? Yes, sir. फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा सीओपी का? So physical significance is that we can get the idea about the performance. तो फिर इफिशिएंसी क्यों नहीं? Yes, sir. Sir, sorry, sir, I don't know about that. गैस टरबाइन का नाम सुना है? Yes, sir. किस साइकिल पे काम करता है? So gas turbine works on Brayton cycle, sir.
कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? Processor. So at first we have to heat the gas. After that we have to flow it through the turbine. And प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, yes sir. आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, Yes, मतलब sir. थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। Yes sir. One process is isobaric and two are isentropic process. यानी दिस साइकिल वर्क ऑन 3 प्रोसेस ओनली? Yes sir, it's open cycle. We can close it, but it is yes sir, it's basically open cycle sir. If it is closed, Then condenser is also used sir. condenser. Why condenser is used? When air is working fluid, what is the function of condenser? Sorry sir, I don't know. So any cooling medium needed sir to cool the air sir. ओके, Yes sir. चलिए लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। Yes sir. आरएसी पढ़ा है, रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनर। ओके, एनालाइजर एक इक्विपमेंट होता है, Yes sir. कहाँ लगाते हैं? Sir, पहले किस सिस्टम में काम करेगा ये बताओ। ammonium refrigeration system sir. ओके, Yes sir. क्या काम है एनालाइजर का? Sir, I don't know that sir. निकेश, आपने टेक्निकल के लिए क्या तैयार किया है? सर मेरे टेक्निकल के लिए तो फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स एंड रिलेटेड टू थर्मो सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा क्यों आपने इन्हीं सब्जेक्ट को क्यों पसंद किया? सर एज सच कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है, मेरा इंटरेस्ट बीटेक लेवल से ही थोड़ा सा थर्मल फील्ड से ज्यादा था, थर्मल एंड फ्लूइड्स और ऑयल और ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो एचपीसीएल का जो वैकेंसी आई है वो भी ऑयल गैस रिलेटेड टू है, तो मैंने फिर ज्यादा फोकस थर्मल्स और फ्लूइड सब्जेक्ट में ज्यादा कंसंट्रेट रहा और मेरा फोकस भी पहले से भी थर्मल फ्लूइड्स में ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में मानता हूँ, इस वजह से मैंने। बर्नौलीज इक्वेशन कैसे आती है निकेश? बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में आपने सुना होगा। यस सर। कैसे डिराइव करते हैं उसे आप? Sir, Bernoulli equation is generally derived from the Navier-Stokes equation. In this Navier-Stokes equation, gravity force, pressure force, and viscous force which come. And after deriving the Navier-Stokes equation, we can come across the Euler equation in which he assumed non-viscous fluid. And after Eulerian equation, we assume steady and incompressible fluid. Then we get the Bernoulli equation, and the derivation and the equation of Bernoulli equation is P by rho g plus V square by 2g plus Z equals to constant. Vortex motion क्या होता है? Sir, whenever a fluid moves in a curved path, then we can call it as a vortex motion. And there are two types of vortex motion: free vortex motion and forced vortex motion. बर्नौली कहाँ एप्लीकेबल होती है? Sir, Bernoulli free vortex motion. फोर्स में क्यों नहीं होती? Sir, because in force we provide energy to the fluid from the external for rotating the fluid. So Bernoulli equation does not consider the external force while it is in flowing. That's why, sir, it considered into the free vortex motion. एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है? Entropy generation, sir, whenever a system goes through a process from one process to another, it might be a chances that the actual maximum work will not be converted from it. Then it is due to the entropy generation, means it degrades the energy of the fluid from initial to final state. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सुना आपने? Moment of inertia, yes sir. क्या होता है? Sir, whenever inertia means to resist something, and moment of inertia means whenever a substance it is in movement, so then it resists that movement is called moment of inertia. What is difference between area moment of inertia and mass moment of inertia? Sir, mass moment of inertia is generally on the basis of the mass distribution. Like first mass moment of inertia mr, and the second mass moment of inertia is mr square. And as we talk about the area moment of inertia, the inertia which whole over the area takes place. So like for circular, pi by 64 d की power 4, and for hollow section pi by 64 d की power d naught की power 4 minus di की power 4. आपने स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म के बारे में सुना है? Straight line mechanism, yes sir. Yes sir, I have थोड़ा idea है straight line mechanism के बारे में. बताइए. Sir, straight line mechanism means the mechanism which generally perform their work in the straight line, something called Hart's mechanism. Sir, actually I don't know the actual. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है.
स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म का पर्पस क्या होता है? सर स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म का पर्पस लाइक जो भी मैकेनिज्म, जैसे हमको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमको यूज करनी है और वहां पे स्ट्रेट कुछ जरूरत है, एकदम एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट समथिंग, तो उस मैकेनिज्म का हम यूज कर सकते हैं। सिंगल स्लाइडर यूज क्यों नहीं किया आपने? वहां पर भी तो स्लाइडर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। हाँ यस सर, स्ट्रेट लाइन, हाँ सर स्ट्रेट लाइन वो एक पार्ट हो सकता है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म का। सर जनरली स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म दो तरह की होती है, एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट। सो सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म एग्जैक्ट में कंसीडर कर सकते हो उसको सर। एग्जैक्ट में कंसीडर कर सकते हो आप? yes, तो फिर आपने स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़ी होगी, तो उनकी क्या जरूरत जब सिंगल स्लाइडर से एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मिल रहा है? जब आपको स्ट्रेट लाइन मिल गया वो भी एग्जैक्ट, तो फिर अप्रोक्सीमेट और इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने की क्या जरूरत है, या फिर क्यों मैकेनिज्म है ये सब? सर आई हैव इसका नॉलेज एज सच तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन एक आइडिया ये है कि डिफरेंट मैकेनिज्म के हिसाब से डिफरेंट पर्पस रहता है, तो इट माइट बी अ यूज ऑफ दैट पर्पस। वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब आप सिंगल स्लाइडर यूज कर रहे हैं तो वहां पर प्रिज्मेटिक पेयर है, जबकि आप बाकी जितने भी स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म देखेंगे तो उन्होंने रेवोल्यूट के ऊपर फोकस किया है। तो कोई स्पेसिफिक कारण है जिसकी वजह से उन्होंने रेवोल्यूट के ऊपर फोकस किया है? सर इसका आइडिया नहीं है सर, नो आइडिया। कोई बात नहीं। डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म सुना आपने? Yes sir, steering mechanism like something mechanism which is generally used to help in the movement of the vehicle, four-wheeler. And steering mechanism are two type: Ackermann steering mechanism and Davis steering mechanism. So Davis steering mechanism are generally used for long run. Like जो mechanism है वो सिर्फ 3 पॉइंट पे अपने आप को सेटिस्फाई कर पाती है। एक फर्स्ट इज मिड पॉइंट एंड द एक्सट्रीम टू एंड। थोड़ा सा मिक्स हो गया आपका, जैसे आप मैकेनिज्म में जैसे पहुंचे हो थोड़ा सा मिक्स हो रही है चीजें। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है? सर इंस्टेंटेनियस सेंटर whenever a part of a body is moving, like either it is reciprocating or rotation or the combination of both. So instantaneous center is those center by which we can assume that the particular component are moving in a circular path only. So that center is called as the instantaneous center. क्यों जरूरत पड़ी हमें इसकी? सर लाइक मैकेनिज्म में हमको जब मैकेनिज्म में डिफरेंट कॉम्बिनेशन के वर्क होते हैं, लाइक ट्रांसलेशन, रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन, अपार्ट फ्रॉम अदर जनरल मोशन एज वेल. So that general motion we can convert it into the rotary motion. So we can introduce the term called center, and that instantaneous center means at a particular time the general motion को हम rotation में consider कर सकते हैं while it is moving, और instantaneous center may vary from their motion, the component of the motion. निकेश, मान लीजिए आपके पास एक 4 बार चेन है, yes, जहां पर आपने ग्रेशॉफ्स लॉ अप्लाई किया। तो ग्रेशॉफ्स लॉ ने आपको बताया कि अगर कोई भी लिंकेज ग्रेशॉफ लिंकेज है और उस ग्रेशॉफ लिंकेज में अगर आपने शॉर्टेस्ट लिंक को कपलर बना रखा है, शॉर्टेस्ट लिंक को कपलर बना रखा है, ठीक सर, मतलब शॉर्टेस्ट का अपोजिट फिक्स है, तो ऐसे कंडीशन में जो मैकेनिज्म आएगी वो रॉकर मैकेनिज्म होगी। रॉकर, यस, ओके, यस सर। अगर वो नॉन ग्रेशॉफ्स मैकेनिज्म है तो वो मैकेनिज्म भी क्या होती है? रॉकर होती है। रॉकर, ठीक सर। इन्हें दोनों रॉकर में कोई डिफरेंस है? सर यदि ग्रेशॉफ्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी कॉम्बिनेशन हो, शॉर्टेस्ट को भी यदि हम फिक्स कर देते हैं तो भी वो ग्रेशॉफ्स ही देगी। लेकिन यदि वो ग्रेशॉफ्स लॉ को सेटिस्फाई कर रही है तो यदि शॉर्टेस्ट को फिक्स कर देंगे तभी हमको रॉकर मिलेगी। यदि शॉर्टेस्ट को फिक्स्ड शॉर्टेस्ट को कपलिंग उस अपोजिट टू द फिक्स करेंगे तभी रॉकर मिलेगी। यदि शॉर्टर को एडजेसेंट टू द फिक्स्ड करेगी तो क्रैंक रॉकर मिल जाएगा। यदि शॉर्टर को फिक्स्ड कर देंगे तो डबल क्रैंक मिल जाएगा। यदि वो ग्रेशॉफ सेटिस्फाई करती है देन, यदि नहीं करती है तो कोई भी लिंक को फिक्स कर दे वो डबल रॉकर ही देगी। तो ये जो आपको नॉन ग्रेशॉफ्स में डबल रॉकर मिल रहा है और ये जो आपको ग्रेशॉफ में डबल रॉकर मिल रहा है, इन दोनों डबल रॉकर में क्या कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही बात है?
सर इसका एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है कि उसमें क्या डिफरेंस, मतलब यदि नॉन ग्रेशॉफ और ग्रेशॉफ्स में यदि डबल रॉकर मिल रहा है तो क्या डिफरेंस आएगा, लेकिन सर मेरे हिसाब से दोनों सेम ही रहना चाहिए आई गेस। ठीक है, ग्रेशॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? सर समेशन ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक एंड लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन और इक्वल टू द समेशन ऑफ द अदर टू लिंक फॉर द कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए सेक्शन मॉड्यूलस के बारे में सुना आपने? सर सेक्शन मॉड्यूलस के बारे में सुना है सर। सर सेक्शन मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ I by Y. I means moment of inertia, section polar moment of inertia divided by Y, distance from the neutral axis. क्या बताता है ये? Sir, it generally denotes the strength of the beam. नोडल सेक्शन क्या होता है? Nodal section. नोड या नोडल सेक्शन? Sir, don't know sir इसका idea. टॉर्शन और बेंडिंग में क्या फर्क होता है? Sir, torsion means whenever we applied a torque moment on a shaft, then the torsion will comes. But the bending moment means when we bend something, when we applied force, so it bends. But when we apply force on the something, it get rotate. So it a torsion. And if it is something bending happens takes place, then it is called bending moment or torsion moment. ठीक है निकलेश, वैसे तो आपको पता होगा इस इंटरव्यू में टेक्निकल का सेक्शन थोड़ा सा कम ही रहता है। ठीक है, तो हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं। आपका जो टेक्निकल का अगर हम लोग देखें, जो भी आपने आंसर्स दिए हैं उसमें कुछ आंसर्स ठीक थे, लेकिन जैसे आप थ्योरी ऑफ मशीन में जा रहे हो या फिर सॉम में जा रहे हो तो आपके आंसर्स सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, आपको वहां पर ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इतना वेटेज है नहीं टेक्निकल पार्ट का इसके अंदर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.